So yesterday we have completed the basic information for multi-port network, and we'll see the special case or the simplest case of multi-port network, that is two-port network, and how it is analyzed. So the two-port network is like any circuit with two pair of terminals. इन्हीं को आप port कहते हैं. We have two ports, one dash and two dash. Say we define the direction also. Voltage is here V1. Voltage of second port is V2. Current is I1. Here current is I2. This is our two port. In last class, we have also seen that the multi-port network, for example, two-port network also, it can be analyzed in two ways. We have seen it already. फिर भी हम लोग लिख लेते हैं इसको. ये analysis of multi-port network can be done in two ways. And that is, first one is by using network functions. The second one is by using network parameters. By using network functions, by using network parameters. Last class में हमने network function cover कर लिया था. We have complete network functions, right? Yes, sir. Okay. We have to start network parameters. We will start network parameters now. Just a second. Sir. Resume recording. Yesterday we have completed network function, और उसमें प्रॉब्लम क्या थी वो भी देख लिया था कि the main problem with network function is that it is calculated on actual working condition which is not feasible for every circuit. This we have completed already. Next, the solution of this problem is network parameters. Okay, so we use network parameters for solution of circuits, the analysis of circuits. Now, what are network parameters? यहाँ से हम लोग आज का क्लास जो है मेन टॉपिक शुरू करेंगे. We'll start with network parameters. And what are net parameters? ये भी same relations निकालते हैं, V1 upon I1, V2 upon I2. Recording is on, Tenzing. Recording on है.
these parameters, the network parameters are also the ratios of electrical quantities like voltage and current. These are the ratio of voltage and current, but in a special case. In case of network function, the ratio is calculated in actual working condition. In network parameters, the ratio is calculated in a special working condition. Special working condition like open circuit and शॉर्ट सर्किट, ऐसे कंडीशंस पे ये रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं. अगर आप ऐसे कुछ कंडीशन लगा कर रेशियो निकालते हैं तो इट विल बी नेटवर्क पैरामीटर्स. ठीक, अगेन नोट करके आप लिख लीजिए, देयर आर 6 ways to represent network parameters. There are 6 ways to represent network parameters. That is, first one is Z parameter. Second one is Y parameter. Third one is T parameter. और उसको आप ABCD पैरामीटर भी कहते हैं. Fourth one is it can be T dash parameter. And then H parameter. And last one is G parameter. ठीक, तो नेटवर्क फंक्शन में आप दो पॉसिबिलिटी थी. There are two types of network functions, that is driving point admittance function and transfer function. But in case of network parameters, there are 6 possibilities. In 6 ways, parameters can be defined. ये 6 उनके नाम हैं. अब एक एक करके इन सबको देखना है मुझे. Now we will start with the first parameter, that is Z parameter. Defined for 2-port network. अब 2-port network बना लेते हैं एक. This is V1, port 1 dash, first port, second port 2 dash, minus V2, current is I2. This current is I1. We have a 2-port network. Again, situation देखिए, आपके पास क्वांटिटीज अभी भी वही है, V1, I1, V2, I2. तो आप इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालेंगे. एंड the Z parameter is defined by following relation. Relation is for V1 and I1. देखिए, नेटवर्क फंक्शन भी आपने Z से लिखा था ना, यहाँ पे नेटवर्क पैरामीटर भी Z होता है. बाय कन्वेंशनल जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, नेटवर्क पैरामीटर्स को स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है.
नेटवर्क फंक्शन को कैपिटल लेटर से, तो वी हैव Z11 I1 प्लस Z12 I2. I1, sorry, V1 is not, this is not I1, this is V1. For Z parameter, it is V1 and V2. V2 will be Z21 I1 plus Z22 I2. आप लोग को एडिशनल साउंड आ रहा है क्या कोई? जी सर। ना देखिए अब नहीं आएगा, आप लोग को बताना चाहिए अगर कोई साउंड आता है। इंस्टीट्यूट में साइलेंस ना, देखिए अब ऐसी इक्वेशन से आप पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी Z11? It will be V1 upon I1 when I2 is 0. Similarly, what will be Z12? Will be V1 upon I2 when I1 equal to 0. Z21 will be V2 upon I1 when I2 is equal to 0. And next last one Z22, ये चार पैरामीटर हो गए. It will be V2 upon I2 when I1 equal to 0. Now, if we see the value of these parameters, चारों के वैल्यू देखिए, they all are V upon I. What is V upon I? What is V upon I? Impedance ना, तो ये चारों पैरामीटर का जो यूनिट है इस वोल्टेज अपॉन करेंट ओम आता है, ठीक. Since all the four parameters has the dimension of impedance only, these parameters are also known as impedance parameters. Now, next slide देखते हैं. Because of similar dimension and unit, the parameters are also known as impedance parameter. इनको आप impedance parameter भी कहते हैं, ठीक. एक बात और यहाँ पे आप देखेंगे, for calculating any of the Z parameter, आप कोई भी Z parameter calculate करते हैं, तो either you put I2 equal to 0 or you put I1 to 0, right? You are placing current equal to 0. ये current 0 कब होगा? ये जो I2 है, ये 0 कैसे हो सकता है? open circuit. This I2 will be 0 only if this port is open circuit. तो जब आप Z पैरामीटर निकालते हैं, या तो आप सेकेंड पोर्ट को ओपन सर्किट करते हैं या फिर फर्स्ट पोर्ट को ओपन सर्किट करते हैं, ठीक. आपको किसी ना किसी पोर्ट को ओपन करना पड़ता है जब आप Z पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक. Now, because of involvement of open circuit conditions in calculation of Z parameter, it is also known as
ओपन सर्किट पैरामीटर, इसको आप ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ Z parameter. In similar ways, 5 more parameters also be defined. देखिए, आपको जो मेन कभी मैं अगर उसमें प्रॉब्लम होता है तो नेटवर्क में, आपको बस ये इक्वेशंस याद रहने चाहिए। Z पैरामीटर के लिए इक्वेशन क्या है, Y पैरामीटर के लिए इक्वेशन क्या है, ABCD के लिए क्या है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इस पूरे 2 पोर्ट नेटवर्क में मेन जो प्रॉब्लम है वो इक्वेशंस को याद करना ही है, उसको मेमोराइज ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। नेक्स्ट पैरामीटर इज Y parameter. ठीक, and this Y parameter is defined by the equation, वाला वोल्टेज के लिए डिफाइन हुआ था, ये करंट के लिए होता है। I1 I2 is equal to Y11 V1 plus Y12 V2, then it will be Y21 V1 plus Y22 V2. Okay. Also in matrix form, इक्वेशन है, इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट इज रिलेटेड टू लीनियर अलजेब्रा ओनली। दिस I1 and I2 in matrix form can also be calculated as Y11 Y12 Y21 Y22 V1 V2। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिमिलर इस मेथड से आप Z पैरामीटर को भी लिख सकते थे, वहां पे मैंने नहीं लिखा है, लिख देता हूं उसको। V1 V2 in matrix form will be equal to Z11 Z12 Z21 Z22 into I1 I2। अब इन Y पैरामीटर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें। Therefore, Y11 will be what? It will be I1 upon V1 when V2 equal to 0. Y12 will be what? I1 upon V2 when V1 equal to 0. Similarly, Y21 will be what? I2 upon V1 when V2 equal to 0. Equation से आप इसको easily निकाल सकते हैं। Y22 will be what? I2 upon V2 when V1 is 0. Okay. अब सेम 2 पॉइंट्स यहाँ पे भी मिलेंगे। What is I upon V? I upon V is what? Nothing but admittance. अब क्योंकि इनका यूनिट एंड डायमेंशन इज सिमिलर विथ एडमिटेंस, these are also known as एडमिटेंस पैरामीटर। Y पैरामीटर को एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, जैसा Z पैरामीटर में था, you can see while calculation of Y parameters either V1 is 0 or V2 is 0। अगर आपको V1 या V2 0 करना है, डायग्राम नहीं बनाया है, बना लेते हैं। एक 2 पोर्ट नेटवर्क, plus minus V1 plus minus V2, this current is I1, this current is I2। V1 को 0 पुट करने का मतलब
ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाए। ठीक, V2 0 पुट करने का मतलब तभी पॉसिबल है जब यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाए, सेकेंड पोर्ट पे शॉर्ट सर्किट, देन V2 विल बी 0। शॉर्ट सर्किट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है। ठीक, तो जब आप y पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे तो आइदर फर्स्ट पोर्ट विल बी शॉर्ट सर्किटेड और सेकेंड पोर्ट विल बी शॉर्ट सर्किटेड। इनको कैलकुलेट करने के लिए पोर्ट्स को शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है, दे आर आल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स। Z पैरामीटर को ओपन सर्किट पैरामीटर्स कहते हैं, Y पैरामीटर को शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स कहते हैं। क्लियर डाउट यहाँ पे किसी को? इसी तरह से हम लोग बाकी के 6 पैरामीटर्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। मैं हर बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आपको थोड़ा सा डायग्राम को खुद इमेजिन करना होगा। नेक्स्ट इज योर T पैरामीटर। T parameter, it is also known as ABCD parameter, also known as transmission line parameter। ये इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा एक लास्ट। ये सब सेम है इस T पैरामीटर। एक 2 पोर्ट नेटवर्क बनाते हैं। T पैरामीटर में प्लस माइनस का कंफ्यूजन ज्यादा होता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ करंट डायरेक्शन। इस पैरामीटर को हम मेनली ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग में यूज करते हैं, और वहां पे इनपुट आउटपुट करंट जैसी चीजें डिफाइंड होती हैं। So this is first port 1 dash and the voltage is V1, current supply is I1. This is a 2 port network. It's 2 dash voltage is V1 and current supply is V2 I2, second port है। Now for this direction, ये ध्यान दीजिएगा, मैं जितने भी पैरामीटर्स लिख रहा हूं ना, करंट का डायरेक्शन और वोल्टेज का डायरेक्शन ये फिक्स्ड है, इनका डायरेक्शन मत चेंज करिएगा आप। जब आप ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं ना, तो इनपुट करंट इधर से इधर की तरफ होती है, आउटपुट करंट भी इधर की तरफ होती है, तो वहां पे वैल्यूज चेंज आती है। यहाँ पे बात अलग है। बात यहाँ पे तो इक्वेशन बनेगा, इट विल बी रिटन फॉर V1 एंड I1 सेम पोर्ट के लिए, इज A V2 प्लस या माइनस, कोई बताएगा? प्लस माइनस माइनस B I2। Similarly, it will be C V2 minus D I2। ये इक्वेशन है, आप चाहें तो मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस कंफ्यूजन होता है पावर सिस्टम में और नेटवर्क एनालिसिस में। नेटवर्क में तो आप यही डायरेक्शन लीजिए, सब कुछ सही है। पावर सिस्टम में I2 को आप इधर ड्रॉ करते हैं, और जब उधर ड्रॉ करेंगे ना तो यहाँ पे प्लस लगाना पड़ जाएगा, आपको I2 को प्लस लेना होगा। खैर, टिल नेटवर्क एनालिसिस ये माइनस रहेगा और ये डायरेक्शन आपको याद करनी होगी। अगर ABCD पैरामीटर पूछता है तो इक्वेशन ये है, डायरेक्शन ये है। क्लियर? एक ही वैल्यू बता, व्हाट इज ए? V1 upon V2 V1 upon V2 when I2 is 0. What is B? V1 upon I2 when V2 is 0। यहाँ पे ओपन शॉर्ट सब करना पड़ेगा, तो इनको ना ओपन सर्किट पैरामीटर कह सकते हैं ना शॉर्ट सर्किट। वो Z और Y में ही था, केवल खत्म हो गया। C will be, this is minus V1 upon I2। What is C? I1 upon V1 when I2 is 0, and D is what? Minus I1 upon I2 when V2 is
0। सर ये तीन पैरामीटर I1 अपॉन V2 होगा क्या सर? जी I1 अपॉन V2, ठीक है, गलती हुआ। अभी क्लियर है? बिलीव जी सर, ठीक है सर। और नेक्स्ट पैरामीटर, नेक्स्ट पैरामीटर कितने हो गए? 3 हो गए ना। फोर्थ वन इज T डैश, या आप इनको A डैश, B डैश, C डैश, D डैश पैरामीटर भी बोल सकते हैं। Defined in exactly same manner as T dash parameter, but the relation is opposite. वहां पे V1 I1 के रिलेशन लिखा गया था, यहाँ पे V2 I2 के लिए लिखा जाएगा। It will be A dash V1 minus B dash I1. I2 will be what? C dash V1 minus D dash I1. आप चाहे तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसकी वैल्यूज को भी निकाल देंगे। करने का जरूरत तो नहीं है, 3 केसेस आपने ऑलरेडी देख लिए। A डैश, B डैश, C डैश और D डैश का वैल्यू निकल जाएगा। जी सर। कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत तो नहीं ना है। नेक्स्ट इज H parameter, it is also known as hybrid parameter. H parameter बनाने के लिए हाइब्रिड इसका नाम भी है। तो one quantity will be from port 1, other quantity will be from port 2. तो आपने पोर्ट 1 से ले लिया V1 को और पोर्ट 2 से ले लिया I2 को। H11 I1 plus H12 V2 is equal to H21 I1 plus H22 V2। अब क्योंकि रिलेशन में पोर्ट्स को मिक्स कर दिया गया है, इसलिए आप उसको हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। इट इज मोर कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ऐसा एग्जांपल है ट्रांजिस्टर मॉडलिंग। ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग में यूज करते हैं इसको, एच पैरामीटर को। ठीक, मेरे ख्याल से अगर आपको एक क्वेश्चन क्लियर है तो फिर आप अगेन H11, H12, H21, H22 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस या नो प्लीज? यस। ओके, लास्ट पैरामीटर इज G पैरामीटर। जैसा H था ना, उसका अपोजिट जस्ट ये हो जाएगा। इट विल बी एक पोर्ट, एक क्वांटिटी वन पोर्ट से और दूसरे पोर्ट से। पहले फर्स्ट पोर्ट से प्रॉपर क्वांटिटी लेते हैं। इट विल बी फॉर I1 एंड V2 related as G11 V1 plus G12 I2 is G21 V1 plus G22 I2। रेफरेंस डायरेक्शंस सेम रहेंगे। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो एक चीज याद रखिएगा, पहले पोर्ट 1 वाली क्वांटिटी लिखी जाती है। V1 को हमने पहले लिखा, I2 को बाद में लिखा। अभी I1 को पहले लिखा, V2 को बाद में लिखा। जो राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं ना, तो I1 को पहले लिख रहे हैं, V2 को बाद में। और यहाँ पे देखिए V1 को पहले लिख रहे हैं, I2 को बाद में। अगर कभी क्वेश्चन को याद करने में कंफ्यूजन होता है तो एक चीज आप याद कर सकते हैं कि द क्वांटिटीज ऑफ पोर्ट 1 will be written prior to
quantities of port 2. ठीक, अब ये 6 पैरामीटर के डेफिनेशन है, ये इक्वेशन ही इनका डेफिनेशन है। आप चाहे तो इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं या मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सबकी वैल्यूज इन इक्वेशन से ही डिराइव हो जाती है, तो मैं इसको अलग अलग नहीं कर रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। जैसे आप स्टार्टिंग में शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, लेकिन करिएगा मत। पहले बेसिक मेथड जान लीजिए, उसके बाद भले ही आप शॉर्टकट का यूज करने लगे। टी और पाई नेटवर्क वैसे भी वो हर अप्लाई नहीं होते, कभी कभी अप्लाई नहीं भी होते, तो आप एक बार कन्वेंशन से चेक करना ही पड़ता है उसको। We have a question like find Z parameter of given circuit. But simplest T network clear है, we have this 2 ohm, 2 ohm and 2 ohm. Voltage and current action will be standard. This is V2, this is I2. This is V2, sorry, V1. This is I1. आप लोग कैलकुलेट करेंगे, मैं करूं? ये फर्स्ट वाला मैं कर देता हूं, उसके बाद आप लोग करिएगा, ठीक है? By definition of Z parameter, it is defined as V1, V2 equal to Z11 I1 plus Z12 I2 and Z21 I1 plus Z22 I2. And from this definition, we get the values of Z1, Z2 is Z11 is equal to V1 upon I1 when I2 equal to 0. Z12 is equal to V1 upon I2 when I1 is equal to 0. Z21 is V2 upon I1 when I2 equal to 0. And Z22 is V2 upon I2 when I1 equal to 0. तो आपको इसको ओपन सर्किट करके आपको बार बार निकालना होगा। आप दो तरह से ओपन सर्किट कर रहे हैं। Either you have to put I2 equal to 0 or you have to put I1 equal to 0. तो सर्किट में दो ही केस हो सकते हैं, तो हम इन दोनों केसेस को अलग अलग कर देते हैं। पहले हम I2 equal to 0 पुट करेंगे और उससे Z11 और Z21 की वैल्यू निकाल लेंगे। Then we will put I1 equal to 0 and we will calculate Z12 and Z22. क्लियर? तो क्योंकि दो सर्किट कंडीशंस बन रही हैं, हम उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। Suppose we have to put I2 equal to 0. I2 equal to 0 का मतलब second port is open circuited. अगर सेकेंड पोर्ट ओपन सर्किट है तो आप सर्किट बेसिक एनालिसिस करने के लिए आप इसको दिखा भी सकते हैं। Say this is 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. यहाँ पे आप प्लस माइनस दिखा या लगा दीजिए, एक वोल्टेज सोर्स ज्यादा अच्छा रहेगा। This is V1 and this is I1. We have I2 equal to 0 and this voltage across this open circuit is what? V2. ठीक, अब यहाँ पे बोलते हैं since I2 is 0, this current will start flowing from this positive terminal of battery, it will pass through the 2 ohm resistance and it will go through this 2 ohm resistance and it will be the return path of current. ये होगा पूरा का पूरा I1
ठीक, क्योंकि I2 0 है, ओपन सर्किट है, करंट इधर नहीं जा सकती, तो ये 2 ओम और 2 ओम सीरीज में आ गए। अप्लाई KVL, इसको लूप 1 मान लेते, एट लूप 1 L1, अप्लाई KVL at L1, लूप 1 पे KVL लगाया, वोल्टेज राइज -V1 प्लस 2 I1 प्लस 2 I1 इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, V1 इज इक्वल टू 4 I1 और V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0 इज 4। आपको एक पैरामीटर मिल गया, Z11 इज व्हाट, 4, राइट। ऑल्सो फ्रॉम सर्किट, अब देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस ब्रांच में करंट कितनी है, प्लीज पुट योर माइक ऑन। 0 0। इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितना होगा, 0 0, करंट 0 है ना, IR 0। इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना होगा, V2 V2, क्योंकि ब्रांच में कोई ड्रॉप नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा V2 आपको यहाँ पे मिलेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट अबाउट V2, V2 इज व्हाट, 2I1, yes sir, रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, करंट इसमें जो है वो I1 है, V2 is 2 into I1, therefore V2 upon I1 when I2 equal to 0 it will be 2। यहाँ से हमको मिल गया दूसरा पैरामीटर Z1, sorry Z21, it is 2। Similarly, for calculation of other two parameters, put I1 equal to 0, I1 equal to 0 पुट करने को सर्किट कैसा मिलेगा, ये हो गया रेजिस्टेंस 2 ohm 2 ohm plus minus, this is V1 and this is I1 equal to 0, I1 equal to 0 means this is open circuit, और यहाँ का वोल्टेज से वोल्टेज सोर्स से दे दे रहे हैं V2, current is I2। Again by same process, since I1 is 0, this I2 will start from this voltage source and pass through to 2 ohm and will be back through this return path। अब ये 2 और ये 2 सीरीज में है, apply KVL at L2, इस लूप 2 में KVL अप्लाई कर दीजिए, -V2 plus 2I2 plus 2I2 equal to 0, that means V2 upon I2 when I1 is 0 is what, 4, 2 plus 2 4 हो जाएगा ना, ये आपको तीसरा पैरामीटर मिल गया, it is Z22 and it is equal to 4। Again also from circuit से फिर से आप देख सकते हैं, also from circuit कि since I1 is 0, इस 2 ohm में कोई ड्रॉप नहीं होगा और एक कोई 2 ohm में कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो this will be what, V1 हो जाएगा, और इसमें करंट कितना जा रहा है, I2। आप कह सकते हैं कि V1 is what, 2 into I2, और is V1 upon I2 when I1 equal to 0 is what, 2। फोर्थ पैरामीटर मिल गया, that
Z12 is what? We get the final Z parameter V1, V2. What was Z11? याद है आपको? 4. 2, 2, 4. Yes. I1, I2. अभी पूरा सब शांत नहीं हुआ है. ओके, बुक्स में शॉर्टकट दिया हुआ है और टी पैरामीटर. Z11 is this plus this, Z22 is this plus this, and Z12 और Z21 will be the central branch. आप चाहे तो याद कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट ये अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो कन्वेंशनल मेथड से ही करना पड़ेगा, ऐसे जैसे हमने केसीएल केवीएल से किया है. डायरेक्ट आप वो सब लगाएंगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा. Similarly, second question is with us for Z parameter again. Calculate the Z parameter for given circuit. Can we have a two-port network? सिंपल सर्किट्स ले रहे हैं अभी, बाद में कॉम्प्लिकेटेड करेंगे. We have 2 ohm. The 1 dash plus minus V1, current direction I1, current direction I2. एक क्वेश्चन मैंने किया है, आप इसको ट्राई करिए. अच्छा, मुझे केवल Z11 बता दीजिए. Will be V1 upon I1 when I2 is 0. 4/3. और कोई? और कोई बताएगा? 1 नहीं है, 4/3 आंसर है. आंसर तो सही है. मैं ये देखना चाह रहा हूँ कितने लोगों से हो जा रहा है.
देखो आपका आंसर आया क्या? हाँ सर, ये तो आया है सर, 4/3 फर्स्ट वाला तो आया है। चलिए, मैक्सिमम लोगों का मेरे ख्याल से आंसर आ गया है चैट जी बॉक्स में। सर। कोई ऐसा है कि जिसको नहीं आंसर आया और मुझसे सॉल्व करवाना चाहता हो? या मुझे क्या ये सॉल्व करना है? ये सिंपल है आप लोगों के लिए, आप लोग कर लेंगे? ऑनेस्टली बताइए, आपका प्रिपरेशन है, आपके लाइफ का है। Sir, could you please dictate us the procedure? So can we change this delta to star? चलिए, एक ने बोला है सॉल्व करने के लिए, मैं सॉल्व कर देता हूँ उसको। सॉल्व करने के लिए पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। वी हैव Z21 is equal to V2 upon V1 when I2 equal to 0. And Z12 is what? V1 upon I2 when I1 is equal to 0. And Z22 is what? V2 upon I2 when I1 is 0. Again, we have two circuits conditions. It is either I2 is 0 और I1 is 0. तो I2 equal to 0 पुट करते हैं, इन दोनों की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ठीक, पहले put I2 equal to 0 and circuit will be like, प्राइमरी साइड पे सप्लाई दिया आपने कितना? V1, this is 2 यहाँ का वोल्टेज प्लस माइनस V2। एक मिनट, पाई सर्किट था ना, ये गलत बना दिया हमने। टू ohm, I2 is 0 and this is I1। सर्किट को सबसे आसान होता, आप केसीएल केवीएल से कर सकते हैं, ज्यादा इजी होता है कि आप वोल्टेज करंट डिवीजन का यूज करें जब आप पैरामीटर्स निकालते हैं। तो सर्किट में एक ही सोर्स रहेगा, या दूसरे को आप ओपन करेंगे या शॉर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ही रहेगा। सिंगल सोर्स से ज्यादा इजी पड़ता है कि आप वोल्टेज करंट डिवीजन यूज करें। देखिए, ये I2 is 0, this 2 and 2 are in series, yes or no? This red wala underline, 2 and 2 are in series. Total resistance 4, Yes. and this is total resistance of this part is 2। I1 यहां तक तो आएगा, उसके बाद डिवाइड हो जाएगा। एक पाथ में 4 ओम है, एक पाथ में 2 ओम है। जरा इस करंट और इस करंट की वैल्यू बताइए बाय करंट डिवीजन रूल। दिस विल बी I by 3 and this will be 2I1 by 3 जो इधर फ्लो करेगा। Clear? Now clearly we can see that V1 is what? This current into this resistance, I1 by 3 into 2. So V1 upon I1 is what? 2 by 3. It is when I2 is 0। तो आपको एक पैरामीटर मिल गया Z11, तो कितना है? 2 by 3 है। Now what is V2? This ये वाली करंट, सॉरी करंट अपोजिट कर दी मैंने। लो रेजिस्टेंस विल बी हैविंग मोर करंट। यहाँ पे 2I1 जाएगा और यहाँ पे I1 जाएगा। This is 2 to 4 to 4 again। Z11 is 4 by 3। What is V2? V2 is this current I1 by 3। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम है ना, 2 ओम का जो वोल्टेज है वही V2 है। V2 is
I1 by 3 into 2. Okay. Now V2 upon I1, that is when I2 is equal to 0 will be 2 by 3, or we will get Z21 is 2 by 3. Similarly, आप बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे क्या? Z12 और Z21 कैलकुलेट कर लेंगे क्या आप? यस नो कुछ बताएं, हो जाएगा ना? मैं मान लेता हूं कि बाकी आपसे हो जाएगा, एंड मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं y नहीं, Z21 will be again 2 by 3 and Z22 will be again 4 by 3. ये वैल्यूज आएंगी आप। सर इसको स्तर में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे? फायदा तो देख के पता चल जाएगा ना वैल्यूज। कर सकते हैं, आंसर अलग है वैसे। अगर आपको सिंपल लग रहा है तो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन। अच्छा, अभी तक हम केवल Z पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे थे। अगर और कोई पैरामीटर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए भी जो आपने क्वेश्चंस निकाले हैं वो सही फॉर्मूला है। आप सिमिलरली उसी तरह से ओपन सॉर्ट करके जो अलग अलग कंडीशंस हैं आप दूसरे पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेस्ट इज ऑल ओनली KCL एंड KVL, नथिंग एल्स। और कोई टॉपिक इसमें नहीं है, आपको बस KCL KVL लगाना आना चाहिए, रेशियोज आप कैलकुलेट कर लेंगे। KCL KVL में हम लोगों ने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, तो अब मैं उतना टाइम इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। अब मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आपको कि बार बार हम सबका कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे। अगर आपके पास कोई एक पैरामीटर है तो दूसरा पैरामीटर उससे कैलकुलेट हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ गिवन सर्किट। ठीक, तो इट इज लाइक ये सर्किट है मेरा, सपोज अभी भी सॉल्व किया है, इसको वही ले लेते हैं। 2 ohm 2 ohm 2 ohm, plus minus V1 plus minus V2, this current is I2 and this current is I1। Z पैरामीटर याद है आपको? Z पैरामीटर पता ही क्या आया था? जस्ट 10 मिनट पहले क्वेश्चन किया आपने। प्लीज स्पीक। 4 2 2 4 4। ये Z11 Z12 Z21 Z22 ये वैल्यूज आई थी। इट इज, अरे फिर मैं गलत लिख दिया, इट इज V1 V2, on secondary side it is I1 I2। ठीक, तो your Z parameter is, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, it is in matrix form 4 2 2 4। हमको पहले Z पैरामीटर निकाला था, अभी सारे पैरामीटर निकालने हैं। तो Z पैरामीटर के अलावा और कौन कौन से पैरामीटर बचे? 5 और बचे ना, Y T T डैश H G, तो कोई भी एक निकाल लेते हैं। Y पैरामीटर और Z पैरामीटर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। Y and Z parameters are directly related as, क्या रिलेशन है कि Z मैट्रिक्स इज इक्वल टू
inverse of my matrix. Also, y matrix is equal to inverse of z matrix. ये रिलेशन होता है उनके बीच में. तो आप चाहें तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज करके आप इनवर्स निकाल सकते हैं, बट मोर कन्वीनियंट मेथड इज बाय ट्रांसफॉर्मिंग इक्वेशंस. तो लिख सकते हैं बट मोर convenient method. Yeah, more convenient method is transforming equations. Equation transform करके ज्यादा आसानी से हो जाएगा. ठीक. In for z parameter the equation is v1 v2 is equal to 4i1 plus 2i2 and this is equal to 2i1 plus 4i2. ये इक्वेशन मिला है ना आपको z पैरामीटर में. And for y parameter equation is like i1 v i1 i2 i1 i2 is equal to y11 v1 plus y12 v2. This is equal to y21 v1 plus y22 v2. अगर ए सेट ऑफ इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं ना, तो आपको y पैरामीटर मिल जाएगा. लाइक you see in equation 1 here, एक सेकंड प्लीज. तो अगर हम z पैरामीटर के इक्वेशन को y पैरामीटर वाले इक्वेशन के फॉर्मेट में ट्रांसफर कर देते हैं, गेट ऑल द y पैरामीटर्स. राइट. कैसे करेंगे? यू कैन सी इन इक्वेशन 1 i1 v1 एंड v2 इज देयर. इनमें है कोई ऐसा i1 v1 v2 वाला? नहीं. v1 और v2 एक साथ किसी भी इक्वेशन में नहीं है, तो आप एक को रिप्लेस कर दीजिए. सपोज आप i2 को रिप्लेस करते हैं, i2 की वैल्यू यहां से निकालते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं. You will get, say this is equation number 1, this is equation number 2. Now, from equation 2, okay, I2 की वैल्यू क्या होगी? It will be V2 minus I1 upon 4. Check. Put the value of I2 in equation 1. Is V1 is equal to 4I1 plus 2. I2 की जगह पे V2 minus 2I1 upon 4. राइट. अब ये पूरा I1 वाले फॉर्मेट में आ गया है, देखिएगा. दिस इज V1 is equal to 4I1 plus V2 by 2 plus माइनस हो जाएगा. कैलकुलेशन सही है ना? प्लीज प्लस माइनस पे एक बार देख लीजिएगा. कैलकुलेशन सही है मेरे ख्याल से.
It will be minus I1. कहां से मिला आपको? yes. ये 3I1 हो जाएगा. 3I1 is equal to V1 minus V2 by 2. That means I1 will be equal to V1 by 3 minus V2 by 6. इस इक्वेशन को ऊपर लिखता हूं मैं. I1 is equal to V1 by 3 minus V2 by 6. Now compare with the equation for Y parameter. Comparing this equation with this equation, can you write Y11 is equal to 1 by 3 and Y12 is equal to minus 1 by 6? लिख सकते हैं? Yes, no, कुछ रिप्लाई करिए प्लीज. Yes, sir. ओके. क्वेश्चन पूछने पे आप लोग रिप्लाई कर दिया करिए, तो उससे मेरा थोड़ा स्पीड बना रहता है, नहीं तो फिर स्पीड लॉस हो जाता है. Similarly, for Y21 and Y22, put the value of I1 from equation 2 in equation 1. Y21 और Y22 का वैल्यू बताइए. मैं वेट करूं, आप आंसर देंगे? Minus 1 by 6 and 1 by 3. राइट. अब ये सिमेट्रिकल पैरामीटर भी है, रेसिप्रोकल भी है, तो Y21 will be minus 1 by 6 and Y22 will be 1 by 3. अगर कैलकुलेट नहीं हुआ है तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए, ये मिल जाएगा. सारे कैलकुलेशन मैं करूंगा तो फिर वही आपको प्रॉब्लम होगी. मेरा ही स्पीड बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ेगा. चलिए, अभी हमने Z निकाला, Y निकाला. You have to find out T, T dash, H and G. 4 other parameters. करना कुछ नहीं है. Only you have to do equation transform. केवल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करना है. बुक में उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, कुछ जानने का जरूरत नहीं है. सब भूल जाइए, केवल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करने का मेथड आपको आ गया, सब हो जाएगा. सर जी. सर इसको वो इनवर्स वाला फॉर्मूला से करने से भी हो जाएगा ना सर एग्जाम में? आपका वॉइस क्लियर नहीं है, आप माइक यूज कर. इनवर्स वाला फॉर्मूला से करने से भी हो जाएगा ना सर? वो एडजॉइन वाला, एडजॉइन ऑफ द कंसर्न मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट. हाँ, हो जाएगा. बट ओनली केस ऑफ Y पैरामीटर. अगर आपको Z पैरामीटर दे करके H पैरामीटर पूछ लिया तो क्या करेंगे आप? वहां तो इनवर्स रिलेशन नहीं है, इट इज ओनली बिटवीन Y एंड Z. तो ये मेथड मैंने इसलिए बताया कि फॉर जनरल केस आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करके भी आप सब कुछ कर सकते हैं. केवल इक्वेशन से खेलना है, मैथ्स. बाकी आपका होमवर्क है, कल आप मुझे बाकी सारे पैरामीटर बता देंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे. ठीक है? अगर आप पैरामीटर नहीं बताएंगे तो नहीं स्टार्ट करेंगे. ठीक है सर. ओके, थैंक यू.